पहला यूनिट और दूसरा यूनिट जो है दोनों के दोनों आर नथिंग बट ऑन पर्टर्वेशन थ्योरी। तो एक अपना है टाइम डिपेंडेंट पर्टर्वेशन थ्योरी, एक है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्वेशन थ्योरी। सो जैसे हम करते जाएंगे मैं एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आप लोगों को इजीली समझ में आए, बिकॉज कुछ कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग बेसिकली डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, तो पता होना चाहिए। तो ये जो पहला टर्म है दैट इज़ एक्चुअली पर्टर्वेशन इटसेल्फ। तो पर्टर्वेशन का मतलब ये है कि हमने एक हल्की सी डिस्टरबेंस क्रिएट की एंड दैट इज़ कॉल्ड पर्टर्वेशन। बट वो डिस्टरबेंस क्रिएट करने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं सिस्टम में वो जानना ज़रूरी है। क्वांटम मैकेनिक्स का जो मेन एम होता है वो होता है एक सिस्टम को डिफाइन करना फ्रॉम ए क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लोगों ने वेव इक्वेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस सिस्टम से, उस वेव इक्वेशन को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी एक सिस्टम होगा, अगर मुझे उस सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आई शुड एक्चुअली हैव द जनरल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम नोन। अभी जनरल इक्वेशन हमें कैसे मिलता है, जैसे कि आप लोगों ने अंडर ग्रेड पे किया होगा, इट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन शॉर्डिंजर इक्वेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो शॉर्डिंजर इक्वेशन हमें एक वेव के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। अगर मेरे पास कोई भी एक टाइम है और मुझे उस टाइम पे जानना है कि वो वेव कैसे बिहेव करेगा, या वो वेव उस टाइम पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम शॉर्डिंजर इक्वेशन जानने से बता सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी है। तो यहाँ पे हम लोग आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं जानने के लिए कि एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, और कर रहा है तो कौन से स्टेट पे है। ठीक है। सो हमारा जो टॉपिक रहेगा अभी रहेगा टाइम इंडिपेंडेंट, ओके, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्वेशन थ्योरी। यहाँ पे हम बात करेंगे विदाउट द फैक्टर टाइम। सेकेंड वाली यूनिट पे टाइम डिपेंडेंट पर्टर्वेशन थ्योरी रहेगा, तो हम लोग दोनों लेने वाले हैं। ठीक है। तो पहली बात यह है कि पर्टर्वेशन इन जनरल अगर आप लोग गूगल करोगे और देखोगे तो यू सी दिस इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल टर्म, जहाँ पे हम लोग एक हल्की सी डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे पर्टर्वेशन होता क्या है। So in general, when we talk about perturbation, you're doing a slight kind of displacement in that box that you have learned. तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग बोलते हैं ना कि एक पार्टिकल इट्स एनक्लोज्ड विद इन अ बॉक्स, और अगर वो एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव गॉट अ न्यूट्रॉन और ए प्रोटॉन विद इन द न्यूक्ली, ओके, और आपको ये डिफाइन करना है कि ये बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होगा वो हम करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स से। सो मान लो वो जो मेरा एक प्लेन बॉक्स है जिसके अंदर एक पार्टिकल ट्रैप्ड है, वहाँ पे मैंने हल्की सी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, तब जाके क्या चेंजेस आएंगे, दैट विल बी एक्चुअली कवर्ड अंडर पर्टर्वेशन थ्योरी। okay, so this is very important. So perturbation theory in general is basically you can say it's a small change, ठीक है, और ये बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ही हम कंटिन्यू करेंगे। वी आर गोइंग टू टेक अ मैथमेटिकल पार्ट टू इट ऑल्सो। ए स्मॉल चेंज और अ स्मॉल लेट्स से डिस्टर्बेंस, एक हल्का सा डिस्टर्बेंस है या एक हल्का सा चेंज है, ओके, और वी कैन से अ स्लाइट चेंज इन हैमिल्टोनियन। तो आप लोगों को याद होगा कि अगर मेरे को कोई सिस्टम डिफाइन करना है, व्हाट आई यूजुअली डू इज आई ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज द हैमिल्टोनियन, राइट। सो आई सिंपली राइट डाउन एच इज इक्वल टू टी प्लस वी, जहाँ पे टी मेरा काइनेटिक एनर्जी हो गया, एच मेरा हैमिल्टोनियन हो गया, और वी हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर इस हैमिल्टोनियन में थोड़ा सा चेंज आता है सिमिलरली, so that will also affect what will be the Hamiltonian of the system. Okay, so this is very important. अभी आप बोलोगे कि ये हैमिल्टोनियन का तो दोनों है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो कौन से वाले चेंज की हम बात कर रहे हैं। अगर हम लोग ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो कौन सी वाली चेंज है, ये है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, मोर स्पेसिफिकली स्लाइट के चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी का स्लाइड चेंज का मतलब ये है कि ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दिस एंड मे बी यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। अगर मैं समझ लो मेरे को एक पोटेंशियल वेल बनाना है, ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी पोटेंशियल वेल के बारे में पढ़ा ही होगा। सो
I'm going to explain it again so that you can have a bit of revision. So let's say example of potential well. ठीक है, तो ट्राई करते हैं उसको समझने की. तो इन जनरल अगर मैंने एक पोटेंशियल वेल लिया, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शॉर्टकट है जानने के लिए कि एक सिस्टम कैसे बिहेव कर सकता है. तो देयर आर सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स विच यू शुड ऑल्सो रिमेंबर. अगर मैंने एक पोटेंशियल वेल ऐसा लिया और मान लो ये पार्टिकल जो है ये ट्रैप्ड है और इस साइड का कोऑर्डिनेट है मेरा -a/2, ओके, और मेरा जो इस साइड का कोऑर्डिनेट है वो है a/2. So, you know, the existence of the particle, or if you want to say the probability of the existence of the particle is at the center, that means इस वाले point पे this coordinate will be nothing but 0, right? So ऐसी वाली जो system होती है ना, इसको हम बोलते हैं symmetric potential well, okay? So अगर आप लोगों को याद नहीं है, I'll just try to revise these things. These are important. This is symmetric potential well. This is symmetric. ठीक है, ये पहली चीज याद रखनी है. And it might be an infinite potential well or may not be an infinite potential well, okay, it depends, but symmetric है, ठीक है, तो maybe I can say it's an infinite potential well. Okay, so that means you need a very large amount of energy so that the particle can come out from here to the outside. Okay, so that's important. अभी मान लो मेरे पास और एक potential well है, ठीक है, maybe I can take one more example here, एक ऐसी वाली, or we'll take this, we'll have one more potential well, और यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली लेट्स से इट्स फ्रॉम 0 to a, ठीक है. सो ये वाली जो है ना मेरी, ये वाली एग्जांपल है एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल की, राइट. दिस इज एसिमेट्रिक बिकॉज यू नो द or the zero coordinate is not at the center, or rather it's at the end. So in general we call them as asymmetric potential well. These terms are important to understand what we are going to study in this particular topic. So this is an asymmetric potential well. अभी ये जो asymmetric potential well है ना, you basically talk about symmetric potential well, you will know what is the value of psi and what will be value of En, okay, eigen value and eigen function, okay. यहाँ पे भी सवाल ये उठता है कि ये मेरा जो asymmetric potential well है, what will be the eigen function मतलब psi n and eigen value means En, और eigen energy we can also say En. So in general जब हम लोग सिमेट्रिक की बात करते हैं, we can straight away say En is equal to n square pi square h cut square divided by 2m square, जो हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन पे देखा है. ये वाला मेरा है एसिमेट्रिक सिचुएशन, ओके. सो एसिमेट्रिक में भी मेरे को ऑलरेडी पता है. अभी ये वाली जो चीज़ है जो हम निकालते हैं ना, किसी भी एक पोटेंशियल वेल का जो वेव फंक्शन या एनर्जी फंक्शन जो हम लोग निकालते हैं, ये तो देखो सिंपल है, बट इन केस मैंने यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन बदल दिया. क्या सिचुएशन किया मैंने ये जो है ये वाला स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे मेरा हल्का सा डिफरेंस है ये. लेट्स से देयर इज अ स्मॉल परटर्वेशन व्हिच इज देयर, so there may be, I can say it's a small bump, okay, it's a small bump that you are applying. So this is basically called perturbation. So यहाँ एक आ गया और यहाँ एक आ गया और let's say यहाँ एक. So this is a small perturbation. अगर मैं ये perturbation की बात करूँ, इसका भी एक coordinate रहेगा, is between 0 and a, okay. So I will just assume, okay, let's see, it may be not up to the scale. ये समझ लो a/3 है और ये समझ लो a/2 है. So you know it's not straight, it's basically having a small bump between a/3 and a/2, and this is basically what is called as perturbation. So we can say this is also an infinite square well potential, ठीक है, और ये जो bump है ना, this is actually called perturbation. So we are actually trying to change the system, and we are going to see that what happens if we are going to apply a slight disturbance to it. इसका हेल्प ये होता है कि वी आर एक्चुअली हैविंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. इफ यू वांट टू स्टडी दैट सिस्टम, वी कैन थिंक in terms of this. थोड़ा perturbation दिया, क्या changes आए, that is something which we can study. So this is the perturbation that we are using, okay. And you know if it has a bump in it, इसका Schrodinger equation solve करना थोड़ा difficult हो जाता है, ठीक है. So try to understand what I am saying here. Solving, okay,
I'll just write down Schrodinger equation for such system, ये वाली सिस्टम जहाँ पे मेरे पास एक हल्का सा perturbation है, ये थोड़ा difficult है. For such system is difficult. I cannot just take away Schrodinger equation and solve it. Okay, it's difficult or it's different, or maybe we can just write down difficult. ठीक है, difficult लिखते हैं. Just use the term difficult. Complicated हो जाएगा ये. And that's why we are going to use the perturbation theory. Is difficult. Okay, और इसकी वजह से हम लोग approximation method यूज करते हैं. Quantum mechanics में we can use approximation method because we are talking about a probabilistic theory, जहाँ पे मेरे को लगता है कि 90% probability है एक state को exist करने का. We can say that this actually exists, that state is there. Okay, so we can use approximation method, hence we use approximation. Okay, method like perturbation theory, like perturbation theory. So you know, when you will actually check your syllabus, आप लोग देखोगे आप लोगों के पास और थोड़े approximation methods है जो हैं included, like W के भी approximation. This is also an approximation method under different conditions. This is used also used in nuclear physics. So perturbation theory से हम लोग शुरू करेंगे जो basically एक approximation method है, and we are also going to check into other kinds of approximation method as we proceed with the syllabus. So this is the idea behind perturbation theory. Okay, so perturbation theory basically हमें करता क्या है, क्या help करता है. This is the note that we are going to write down in the next slide. Okay, so अभी हम ये जानेंगे कि जो अपना perturbation theory है ना, what kind of information does it provide. Okay, so let's make some brief here. So this perturbation theory, okay, what it does is basically a tool. You know, it's basically a mathematical tool, you can say, or a systematic, okay, or a systematic procedure. You can make your notes. Okay, it's important. Procedure for obtaining approximate solutions to a perturbed problems. तो एक वाला सिस्टम है जहाँ पे मैंने कुछ पर्टर्वेशन डाला, उसका अगर मेरे को सोल्यूशन निकालना है तो मेरे को पर्टर्वेशन थ्योरी यूज करना पड़ेगा. ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है कि पर्टर्वेशन थ्योरी के बाद पर्टर्वेशन डाला गया वो सिस्टम पे. दैट इज रॉन्ग. पहले सिस्टम में अगर कोई पर्टर्वेशन है तब जाके हम लोग पर्टर्वेशन थ्योरी यूज करेंगे. दैट इज द आइडिया. ओके, टू अ पर्टर्ब प्रॉब्लम, ओके, बाय using, okay, this is interesting, solution for unperturbed case, by using solution for unperturbed case. What does it mean? मेरे पास अगर एक पोटेंशियल वेल है और वो परटर्ब नहीं है, सिंपल सिस्टम है, समझ लो ये वाली सिस्टम, I can write down the Schrodinger equation for this very easily. But then what happens is, in case, okay, I use some perturbation, तो ये वाली जो solution है ना, उसी को हम use करेंगे, and we are going to change that solution accordingly so that we are going to get the solution for the perturbed state, and that is what is meant by this. Okay, a tool or a systematic procedure for obtaining approximate solution to a perturbed problem by using solution for unperturbed case. Okay, so this is very important. So यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि if I actually solve for an unperturbed case, okay, if I basically solve it for an unperturbed case, I can write down the Schrodinger equation. So maybe I can write it down here. For unperturbed case, okay, I can write down what is psi n, and I think these kind of problems you might have solved a number of times. In case you don't remember, just check any quantum mechanics book. This solution is more or less there. Preliminary solution of this is already there. 2 by a sine of n pi x divided by a. So these are certain results which you should remember and know for this particular course. How to derive them? You have to check your book. So if you're going for your NetGate exam, the derivation of this is also important. You should know
because there are questions asked from there, so it's important. तो आप लोग एक बार check करना ये. And as I said, energy in the previous slide I already told you. अगर मैंने unperturbed लिया n square pi square, okay, then I can write it down as h cut square divided by 2 times m a square. So these relations we have already checked, okay, and we are going to use it. So ये वाला unperturbed case के लिए है, और ये वाली जो results है ना, हम लोग इसको use करेंगे for perturbed cases. So these results will be used for perturbed cases. So इसके वजह से हम लोग इसको रखेंगे हाथ में और use करेंगे. So we are going to learn this now, how we are going to use this in the perturbed cases. Okay. So पहली बात तो ये है कि जब मैं एक पोटेंशियल वेल बनाऊंगा और मैं एक परटर्वेशन की बात करूंगा, राइट, मे बी आई विल जस्ट रीड्रॉ व्हाट आई हैव ड्रॉन इन द लास्ट स्लाइड. सिंपल, ये गया यहाँ पे आया, बट देन इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ परटर्वेशन, लेट्स से. So we are applying a perturbation. I'm not saying whether it is symmetric or antisymmetric right now. I'm just saying about the Hamiltonian. ठीक है, इस सिस्टम का अगर मुझे एक हैमिल्टोनियन लिखना है, I will write it down as H, which is the total Hamiltonian. Please remember this is equal to the Hamiltonian of the unperturbed case plus the perturbation whatever is being applied. Okay, so these are some important terms that you should know. Okay, so अगर मैं बात करूँ what is H, this is perturbed Hamiltonian, because ये वाली जो है combination है दोनों चीज़ों की. So perturbation मैंने add किया है, so that means it will be actually a combination of the unperturbed term plus the perturbed term. So basically we call it as perturbed Hamiltonian. So इसको हम नाम देंगे perturbed Hamiltonian. I'm going step by step, but you will need all of these, very important. Perturbed Hamiltonian. Right, and then we actually have got H naught, which is unperturbed. Okay, this is not having any kind of perturbed Hamiltonian. So whatever result we have above, we are going to use that unperturbed Hamiltonian, right? And then finally we have got H prime. I'm not calling it as Hamiltonian right now, but of course it's also a Hamiltonian. We'll just write it as the perturbation term. So whatever perturbation is being added to the Hamiltonian, that is actually the perturbation term. So for now, let's use these concept, and these are the three things that we should actually remember. Okay, okay. Let's start dividing the perturbation theory. Okay, perturbation theory can be divided into different sections. Okay, and we are going to do that right now. Okay, so maybe I can just type this: types of perturbation theory. Okay, there are different kinds of perturbation theory, and if I really want to divide them, I can get them into two types. Okay, one is time independent and one is time dependent. ठीक है, तो एक मेरे पास हो गया time independent और दूसरा वाला हो गया मेरा time dependent. So before we really start, we need to categorize them and try to understand that what are the different types of perturbation theory that are possible. Okay, so one is time independent perturbation theory. I'll just write down PT in short. Okay, और यहाँ पे what we can say is that this H prime, okay, जो हम लोग ले रहे हैं ना, is not a function of time. Okay, this is not a function of time, and I can write it like this. This is not a function of time. Okay, that is why it is time independent, does not depend on time. You might say, okay, it's obvious, but what is the example? So I'll just give you one example here. The examples that you might have come across a number of times, because as soon as it becomes time dependent, the approach is different to solve that problem. If you are basically having
Hamiltonian perturbation, the perturbation term. Okay, please remember I'm using these notations here as per this. H prime is the perturbation term, and जैसे ही मैंने बोला कि जो perturbation term है वो let's say है V naught. Okay, it does not depend on time. This is basically a potential, and this is the potential that exists between, let's say, a by 3 and a by 2, a by 3 and a by 2. So this is basically called a perturbation which is being applied, and it does not depend on time. What does it mean? That अगर मैंने मान लो यहाँ पे मैंने लिया ना a by 3 और a by 2, ये जो मेरा height है ना, this is the potential change that is happening. This height is V naught. This is that example that I'm giving you now. So ये वाला जो है, it can be considered to be this. Okay, and we can also have certain terms like this, or maybe I can write down this as H prime is equal to G cos kx, G cos kx. So I don't know if you have solved these kind of problems, but you will find that ऐसी वाली problem भी होती है जहाँ पे ये perturbation ऐसे मतलब Hamiltonian का form कुछ it will be terms of sine or cos, and here if it's a step function maybe, but here the perturbation term is let's say G cos x or kx. ठीक है, ये वाला एक हो गया, और ये वाला जो चीज है ना मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, this is basically again we can actually divide it into two sections. Okay, we can actually have it as non-degenerate. I think I'll explain non-degenerate, but I think you already know it from atomic and molecular physics. Non-degenerate. Okay. So this may be non-degenerate. Okay, or it may be degenerate. Okay, it may be a non-degenerate term or it may be a degenerate term. Degenerate term. So it can be either of them, and we can basically have either of them. Okay, so the important thing is we should know what is a non-degenerate term and what is a degenerate term, and maybe we can just have a clear explanation of this. Okay, before we go into the time dependent part. तो यहाँ पे बीच में एक स्पेस बना लेते हैं. ठीक है, so we can have it as non-degenerate, and let's just write down what is the explanation of non-degenerate. Okay, okay, so what do you mean by non-degenerate? So there are certain situations where you will actually have the energy levels involved. Okay, and if the energy level gets splitted, it's degenerate, and if doesn't get splitted, we are basically talking about a non-degenerate state. Okay, so non-degenerate is in general if unperturbed Hamiltonian, okay, let's say H naught, we have it, the unperturbed Hamiltonian have non-degenerate energy eigenvalue. Okay, so it has a non-degenerate eigenvalue if the unperturbed Hamiltonian. Okay, so maybe I can just use the pen here. What is the unperturbed Hamiltonian? H naught, right? So if you go to the previous slide, you see this H naught is actually the unperturbed Hamiltonian. So if this unperturbed Hamiltonian have non-degenerate eigenstate, that means that you can actually write down the Hamiltonian equations or expressions something like this. I hope you remember this. H naught psi 1 is equal to E1 psi 1. This will actually define the system where psi 1 is the eigenfunction, and E1 is the eigenfunction, right? So psi 1 psi 2 तुम्हारा eigen function represent करेगा, और E1 E2 and so on, it will represent the eigen values, right? So we can have an expression like H naught psi 1 is equal to E1 psi 1. We can also have an expression like H naught psi 2 is equal to E2 psi 2, right? So if you write down these expressions, you see with every psi 1 there is a unique E1, with every psi 2 there is a unique E2. It does not split. We don't have two different energies for the same wave function, and this is what is called non-degenerate. So you have to just remember this technically. This is very important. Okay,
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो टेक्निकली आप लोगों को ये याद रखना है कि दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन डीजेनरेट केस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है कि Psi1 और Psi2 जो है, Psi1 एंड Psi2 हैव okay corresponding E1 and E2 energy values. So Psi1 and Psi2 have corresponding energy eigenvalues, corresponding E1, okay, maybe E1 and E2 energy eigenvalues. So I think the idea is very simple now if you know it mathematically. So abhi you have to remember it from a quantum mechanics point of view. For every Psi1 there is an E1, Psi2 ka E2, and so on. There is no splitting. I cannot have for this Psi1 and E1 dash and E2 dash. Okay, not possible. If that's the case, it will become degenerate. So this is actually called non-degenerate. So remember, we can have a non-degenerate case. At the same time, we might have a degenerate case also. We are going to eventually see as we go along with unit 1 and unit 2 all these cases. Okay, so it's very important. Okay, so ये वाला हो गया मेरा time independent. Now we should also check for time dependent. So for time dependent, perturbation theory is the other type of perturbation theory. This is time dependent perturbation theory. Okay, and here also what we have is this H prime, which is the perturbation term, but this will depend on time now. Remember, the original Hamiltonian that we are going to use may not depend on time, but the perturbation might depend on time. Okay, then also it will become a time dependent perturbation theory. Okay, what does it mean? That you might have a perturbation applied to a system which is existing for a certain period of time. Okay, so that means it will have some kind of time dependence, and that is why we call it as a time dependent perturbation theory. Okay, or maybe if I write it down as a trigonometric term, I can simply write it down as H prime is equal to V naught cos of omega t. So देखो, जैसे हम लोगों ने cos omega t डाल दिया, मतलब यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व है, और यहाँ पे देखो g cos kx, यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व नहीं है। हाँ बोलो। या तो ये जो V नोट आपने लिखा है, ये कौन सी वैल्यू है? ये वाली पोटेंशियल है। ओके सर। yes okay, so this is actually a good question. See, perturbation doesn't mean कि it will be something like this always, not necessarily, because ये perturbation term जो है ना, it might be in form of some periodic function also. So whenever I'm going to write it down as a cos omega t, maybe यहाँ पे एक periodic changes भी है. It may be a periodic function. It's only V naught. Probably will just have a hump. It will be a kind of step function. But if there is a cos term or a sine term involved, probably we are going to have a more difficult situation. Okay, so we have to first understand what are the different types, and then only we can go and check what are the mathematical formulations for it. Okay, so as soon as I say H dash, okay, let me repeat this. I think this is a bit complicated. So before we start with the mathematical idea, we have to be very clear about this. As soon as I say that I am applying some kind of perturbation to the system, मतलब यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ. Let's say at this particular point there is zero potential between this point and this point. कोई bump नहीं है because it doesn't have to overcome any potential. It will just move straight on this side. It will hit the wall, come back, hit the wall. It will keep on moving to and fro. But जैसे ही मैंने बीच में एक पोटेंशियल डाला, मतलब मैंने बीच में एक हल्का सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया. इमेजिन आई टोल्ड यू द अदर डे, it's a road, okay, a straight road, okay, and you basically have a ball, and then this ball will keep on rolling, right? It's very simple. और ये रोल करते करते आगे निकलेगा आराम से. अभी मान लो यहाँ पे एक हल्का सा पत्थर है, जैसे ही रोल करते आएगा बॉल यहाँ आएगा, and then probably it will change its path and then again it will go this way. But there is some kind of disturbance that has been added, and this is perturbation. This is what we are doing it here. Now, when an ideal case is considered, maybe I can just introduce a step function, but ऐसा ज़रूरी थोड़ी है. अगर हम लोग सिचुएशन देखें तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि
इसमें हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन भी हो सकता है, दिस इज एक्चुअली समथिंग व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ मे बी अ कॉस फंक्शन और अ साइन फंक्शन. Remember, if it is a non-periodic function, you know, it is a rough surface, it will be very difficult to define the system. So in general we are considering these kind of system. And in nature, अगर हम लोग एटॉमिक स्केल पे जाते हैं, अगर किसी सिस्टम में एक डिस्टर्बेंस रहता भी है तो उसका भी एक पीरियोडिक नेचर बिल्कुल होता है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So before we proceed, I think we also have to know, since we talked about non-degenerate, we also should know a bit about what is degenerate. Okay, so degenerate की बात जब हम लोग करते हैं ना, because we are going to use this also. If H naught, okay, if we are basically having, let's say, the unperturbed Hamiltonian, it basically have, let's say, degenerate eigenvalues. Okay, degenerate eigenvalues. Okay, eigenvalues. So this term eigenvalue and eigenfactor, eigenfunction, these things you are going to come across again and again. I expect that all of you remember it from your lower classes. You must have done it there because it was important. We have also done it in mathematical physics, but in case you don't exactly remember, एक जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं. If I just write down H naught psi1 is equal to E1 psi1, okay, this psi1, okay, is actually representing your eigen function. Wave function है ना ये. So this is eigen function, and this will actually represent eigenvalue. So अगर मैं कोई भी एक रिलेशन लिखता हूँ ना, उसमें जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं वो रहते हैं आइगन वैल्यूज. ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स में होता है ये, बट यहाँ पे हम लोग एक जनरल टर्म ले रहे हैं. ये वाला मेरे को एनर्जी डिफाइन करेगा. दिस इज द आइगन वैल्यू. सो इफ H नॉट व्हिच इज द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन हैव डीजेनरेट आइगन वैल्यूज, इसका मतलब कुछ ऐसा है. डीजेनरेट है, इट्स नॉट नॉन डीजेनरेट, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इसका मतलब कुछ ऐसा है, इफ आई हैव एन एक्सप्रेशन लाइक H नॉट psi1 is equal to E1 psi1, and then we also have, let's say, H naught psi2 is equal to E1 psi2. ओके, अब यहाँ पे देखो, ये psi1 के साथ कनेक्टेड है E1, psi2 के साथ भी कनेक्टेड है E1. So that means it's basically having a kind of degeneracy. Okay, so what we can say is, ये भी एक आइडिया है, psi1 and psi2 has same E1, दोनों का एक ही एनर्जी वैल्यू है. ओके, सो दिस इज डीजेनरेट. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डबली डीजेनरेट बिकॉज यू नो दोनों psi1 psi2 अलग हैं लेकिन उनके साथ एक ही एनर्जी कनेक्टेड है. हेंस वी आर बेसिकली गोइंग टू से दिस इज डबली degenerate. So you know, don't get confused, we are going to do some numerical problems also based on this, but ये degeneracy और non degeneracy का जो रिलेशंस है ना, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में बहुत यूज किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे वी आर जस्ट अप्लाइंग दैट आइडिया विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. So the topic, you know, which will be actually relevant for us in this particular you know, for the next 2 or 3 sessions would be this. Topic is non. So now we know what is degeneracy and non-degeneracy. So it will be non-degenerate. You can note this down. ये पढ़ने वाले हैं अभी हम कुछ क्लासेस के लिए. Although we are also going to cover other topics. Okay, apart from non-degeneracy, degeneracy भी देखेंगे. Time independent perturbation theory. So I hope you have a clear idea of what are the different terms that we are having here. Perturbation theory. इसीलिए I have divided it into different sections. I have made a table and I told you what are the different terms and what is its meaning. Non-degenerate, now we know what is non-degenerate, shown in the last slide. psi1 psi2 के लिए E1 E2 अलग अलग रहेगा. टाइम इंडिपेंडेंट मतलब मेरा जो पर्टर्वेशन है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा. पर्टर्वेशन थ्योरी मतलब अगर मेरे पास एक सिस्टम है जहाँ पे हल्का सा पर्टर्वेशन है, उस सिस्टम के
वेव इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द पर्टर्वेशन थ्योरी, ठीक है। बट एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि ये जो पर्टर्वेशन वाली बात है ना, इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ वेरी लार्ज चेंज, ओके, दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू कंसिडर. So for that, probably I'll just give you one small note, and whenever I'm going to write down a note for you, maybe you don't need to write it down for your exam purpose, but this is important to understand, okay. So the note is perturbation theory, okay, perturbation term, okay, which is the perturbation term H prime. Perturbation term is H prime, okay. It should be small, it should be small, so the thing is, whatever perturbation we are going to consider, it should be small. Why I'm saying this, because whatever image I have drawn here, we have just zoomed in, ठीक है, इसमें zoom कर चुके हैं हम लोग, इसीलिए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा perturbation दिया हुआ है. बट इफ़ यू कंसिडर द रेंज ऑफ 0 to a, ये विद इन, समझ लो एक न्यूक्ली है जो तुम्हारे एटम के अंदर ट्रैप्ड है, समझ लो एक न्यूक्लियस जो अपने न्यूक्लियस के अंदर ट्रैप्ड है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है. उसका विड्थ क्या रहेगा जो ट्रैप्ड है, इट इज 10⁻⁻10 मीटर, उसके बाहर तो नहीं होगा, बिकॉज वही है अपना रेडियाई, ठीक है. तो रेडियाई अगर 10⁻10 मीटर है तो डायमीटर होगा 2 × 10⁻10 मीटर. सो मतलब जो उसका स्केल है ना, वो 10⁻10 मीटर ही रहता है. तो बहुत छोटा स्केल है, वहां पे मैंने एक हल्का सा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पर्टर्बेशन. सो हम लोगों ने जो चेंज क्रिएट किया ना उस पर्टिकुलर सिस्टम में, वो बहुत छोटा है, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट द पर्टर्बेशन टर्म H प्राइम शुड बी स्मॉल. स्मॉल मींस बहुत स्मॉल ही होता है, 10⁻⁻5 -6 ऐसे वाले स्केल पे होता है, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली स्मॉल. और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वी आर बेसिकली गोइंग टू यूज द पर्टर्बेशन थ्योरी. बाय पर्टर्बेशन थ्योरी वी फाइंड द अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन. क्या करते हैं हम लोग, वी फाइंड अप्रॉक्स सॉल्यूशन. सो दिस इज एक्चुअली द एम. और यही समझने के लिए हम लोग यूज करेंगे नॉन डिजेनरेट टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो बिफोर वी स्टार्ट ये वाली चीज क्लियर होनी जरूरी थी. सो नाउ वी कैन एक्चुअली हैव अ लुक कि अपना अप्रोच जो है वो कैसा रहेगा, ठीक है. सो गोइंग टू टेक दिस. सो फिर से कॉन्टैक्ट करें, जस्ट कॉपी दिस in the next slide, okay. So non-degenerate time independent perturbation theory. So I hope आप लोगों को नोट से समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे छोटी सी perturbation डालनी है, and then I'm going to analyze it. So what is basically the schematic? What do you mean by schematic? It means that what kind of expression am I going to start with, okay. So I'll just write it down as in general schematic, okay. So मेरा जो schematic है वो ऐसा है कि we have already written H is equal to H naught, okay. The perturbed Hamiltonian is equal to the unperturbed Hamiltonian plus the perturbation term. और ये अपना H प्राइम है जो बहुत छोटा रहेगा, ठीक है. अभी हम लोग पर्टर्बेशन थ्योरी से मिलता क्या है, यहाँ पे हम छोटी छोटी पर्टर्बेशंस को ऐड करेंगे, छोटी छोटी चेंजेस को ऐड करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द final result, okay. So what happens is, if I just write it down, let's just try to analyze this first. By perturbation theory we obtain, okay, we obtain En. So that means we have to find out what is the energy of the system. अभी मुझे तो एनर्जी नॉर्मल का पता है, मेरे को फॉर H नॉट पता है. आई डोंट नो व्हाट विल बी हैपनिंग इफ वी टेक H नॉट एंड H प्राइम टुगेदर. So ये जो मेरा En है ना, it will be actually, it will be a combination of a number of energy terms, okay. And let's say it is a non-degenerate, so for each wave function of the perturbation term we might have it as En naught, En1 first energy state, and then maybe En2 and so on. So we'll keep on adding them, okay. As we keep on doing it, it will become more and more clear, so don't worry. En2, okay, and so on. So ये वाला मेरा एनर्जी फंक्शन दे देगा, एनर्जी आइगन फंक्शन दे देगा. एंड सिमिलरली आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज माई wave function, okay, or the
eigenfunction. So basically I can write it down as psi n, and then this is 0 plus, I can take this to be psi n, and then this is 1, okay, plus this is again, this is psi n, and then I can take it 2 and so on. So I can have so many wave functions combined, and when I combine all of them, I'm getting the total wave function for the system. I can have so many energy eigenvalues, and when I combine all of them, I'm going to get the total energy eigenvalue. This is the idea behind this. Okay, so this is very important, और इसकी वजह से मैं क्या करूँगा? I'm going to write down all these terms. Okay, so I think this is important. En is equal to, you have to just write down everything. Maybe I'll just use a dot there. Energy eigenvalue, ये क्या है? What are these terms actually? Energy eigenvalues for perturbed Hamiltonian, मतलब H का निकाल रहे हैं हम लोग, perturbed Hamiltonian का energy eigenvalue for perturbed Hamiltonian. By the way, H capital होना चाहिए हमेशा. Somehow I'm writing it in small, that's not right. Hamiltonian, okay, for nth state. You may have a system which may be existing in the nth state, which state we don't know. So let's say it is for the nth state. ठीक है, ये वाला हो गया मेरा En, and similarly I can actually find out what is En0. Okay, so ये वाला हो गया energy eigenvalue. Think about this, for unperturbed. This is unperturbed. I'll tell you why. I hope it will be clear. Hamiltonian for nth state. क्यों? इसके साथ एक एनर्जी फंक्शन है, वो है En. ये वाला मेरा अनपर्टर्ब्ड है, H0. तो इसका एक एनर्जी फंक्शन रहेगा, which is nothing but represented by En0. Okay, and then I think you can guess En1 and En2 and so on. These are the small perturbations that are getting added to the system. Okay, so हम लोग जब perturbation chain लगा रहे हैं ना, वो वाला correction मुझे add करना पड़ेगा, because in general the energy is En0, but as soon as I'm including perturbation, I have to change this En0. That means I have to correct it for the first order energy state, for the second order energy state. I have to do the correction to this particular energy, and that is what is represented by En1, En2 and so on. Okay, so what is En1? This is actually first order. I'll just write it down first, and then you think about it. First order energy correction to energy eigenvalue for nth state. सवाल ये आता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्यों चाहिए? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट perturbed system, मतलब यहाँ पे एक हल्का सा perturbation हुआ है. अगर perturbation है मतलब energy भी change हुआ है. There are different states. Okay, first order correction, it may be a second order correction and so on. Okay, whenever you are writing down a binomial expression and you are expanding it, you've got the first order term, second order term, third order term. Depending on what are the values, you basically ignore the higher order terms, right? So in a similar way here also we are going to do that. जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एक हो गया, उसके बाद सिमिलरली En2 with the second order correction, but then the third order correction will become smaller and smaller. So usually we just consider it to be the first order correction and second order correction. Second order energy correction to energy eigenvalue, okay, for nth state. So this is En2. Okay, so this is important to understand that what is En, what is En0, what is En1, what is En2. Okay, so don't get confused. Okay, please make sure that you understand this. Okay, in a similar way we can also write it down for psi n and so on. Then why not just write it down? Okay, लिख लेते हैं एक बार फटाफट. So psi n
is equal to energy eigenfunction. This is not eigenvalue, this is eigenfunction. So energy, we basically call it technically as energy eigenfunction. Okay, for psi n है, तो ये वाला perturbed Hamiltonian के लिए होना पड़ेगा. This is for perturbed Hamiltonian. Okay, perturbed Hamiltonian for nth state. For nth state. So it's the same thing, whatever we have written on top, but it's psi n, and then I think I don't need to explain it. I think you'll understand this, and so on. So that means जो मेरा psi n naught है वो रहेगा energy eigenfunction for the unperturbed Hamiltonian, मतलब connected to H naught, and then psi n1 will be the first order correction, psi n2 will be the second order correction, and so on. The question is, how do we find out the first order correction, second order correction for both energy eigenvalue and energy eigenfunction? So in the next class, what we are going to do is we are going to take up this problem and going to understand how we are going to do that correction. Okay?